So this is a DC current. Suppose it is 220 volt DC. And there is another AC current whose RMS value is 220. They're asking you which is dangerous. You know, in case of DC, this is constant. This value is constant. So 220, 220, 220, 220 at all instances it will be 220. But over here, if you see, we know that the peak value of the current or the voltage, the formula is ERMS is E naught by root 2. So E naught is going to become ERMS into root 2. That is 220 into root 2. It is going to become 311 volt. Means the peak value of this is 311 volt. So if the person gets a shock, he will get maximum shock of 220 volt. But this guy in the AC will get a maximum shock of how much? 311 volt. Barabar? So who is more dangerous over here? AC. AC is more, alternating current is more dangerous than which value? DC value, because its peak value is maximum. Okay. This is the first question. The 16th one. Question number 22 of your digest. An alternating voltage E is given as 6 sine 314t. Find the peak value, the frequency, the time period, and the instantaneous value at time is equal to 2 milliseconds. Listen to me. So if I write this equation, you know, this equation can be written as E is E naught sine omega t. What is E naught? 6 volt. And this E naught is also termed as which value? Peak value. How much is omega? Angular frequency 314 radian per second. So they have asked you frequency. You know, omega is equal to 2 pi f. 314. So 2 pi f. 314. Pi is 3.14. Can I say it will go 100 times? So frequency will be how many hertz? 50 hertz. So I know peak value is given as 6 volt. Frequency is given as 50 hertz. Time period. अच्छा, इसका उल्टा करेंगे तो time period मिल जाएगा. Time period, you know, 1 by f will become 1 by 50 seconds. This is the time taken for one oscillation, one wave. And the instantaneous value at time is equal to 2 milliseconds. So if I take this equation of E is E naught sine omega t, that is 6 sine omega t. They are asking you this t has to be how many milliseconds, beta? 2 milliseconds. Are you there with me? So E will become 6 sine 314 into 2 into 10 raised to minus 3. Okay. Getting it? Now this can be written as 6 sine 628 into 10 raised to minus 3. 6 sine 0.628. करेक्ट है क्या? हेलो, अच्छा 628 you know is 2 pi. अरे भाई, you know this, that E will become 6 sine. Yes, 6.28 is 2 pi. बराबर? Can I write this as 2 pi by 10?
6.28 is 2 pi, na? This is 0.628. It will become 2 pi by 10. But indirectly it will become what? Pi by 5, right? Hello. It is pi by 5. So E is going to become 6 sin pi by 5. अच्छा pi कितना डिग्री होता है एंगल में? अगर डिग्री में निकालना है तो 180 by 5. करेक्ट है क्या? 5 3s are 15, 16, 17, 18, 6 are. So 6 sin how many degree? 36 degree. Now this you can look it in your log table, sin 36, and you will get the result of the answer in volt. I hope you all have understood the whole question. ठीक है? (23) Same question again. An alternating voltage E is given as 140 sin 314t. It's 3142t across a resistor 50 ohms. Find the frequency and the RMS current through the resistor. Now listen to me, simple sum. Can I write this equation as E is 140 sin 3142t, that is E naught sin omega t. So what is peak value of the EMF? 140 volt. What is omega? 3142 radian per second. ये दिया हुआ है, ठीक है? This given. They are asking you what is the frequency. So omega is equal to 2 pi f. Omega is 3142. 2 pi is 3.14. Can I say this will go approximately 1000 times? 2 by 1000 will become 500 hertz. This is the result of frequency. I got this frequency. Similarly, if I tell you what is IRMS? Josefa, Dia, switch on your video. So my connection is unstable. I need to find IRMS. अच्छा, you know the formula E naught is I naught into R peak value के लिए. What is E naught? 140. I naught into R कितना है? This need IRMS. So IRMS the formula you know is I naught by root 2. That's 14 by 5 into root 2. It become 5 2s. So approximately IRMS is going to become 2 ampere. So following the same relations of E is D naught sin omega t and E is I into R of alternating current in voltage. This will be the value of 23. Deep, say yes or no. Deep Shah. Yes, sir. Deep Shah is there or not? Yes, sir. No. ठीक है. K through Paril. Deep.
way through parallel. Your voice is breaking. You there, Madhura, let me take the attendance, please. Your voice Mita, is breaking. Sir, your voice is breaking. Shrey Kacheria, Siddhant Rajpurohit, Siddhant Rajpurohit is there. Camera, please, fast, come on. एक minute. Now is it clear? Now is the voice clear? Hello. Clear हो रहा है अभी? Hello. Yeah. So हम फट गए. Are you there? Yes, sir. Okay. I need to call the parents only, those who are absent now today. Question number 39. What is the question given? Listen to me now. An inductor of inductance 200 millihenry. So L is given as 200 millihenry. Is connected to an AC source of peak EMF 210 volt and a frequency of 50 hertz. Calculate the peak current and what is the instantaneous value of the source when the current is there at the peak value. So I want to find the instantaneous voltage when the current is there at the peak value. Listen to me, now just pay attention. We know this is an inductive circuit. Okay. And E naught is given as 210 volt. L is given as 200 millihenry. I know the opposition over here will be XL, which will be 2 pi FL. The current will be this current. So I want to find the peak current. Can I say E naught will be I naught into opposition? Opposition over here is XL, not R. You know, na XL, XC, and R. Three oppositions are there. What is E naught? 210. I naught we don't know. What is XL? 2 pi FL. So 210 is I naught. 2 pi F. F is given as 50 into L is given as 200 millihenry. Milli means 10 raised to minus 3. Can I say 3 zeros will cancel with this 3? 5 2s are 10. So 210 is I naught into 5 2s are 10 में से ये 0 भी cancel हो गया. तो बचा क्या? Yes. 2 pi बचा ना? So I naught will become 21 by 2 pi. 2 pi is 6.28 amperes. This will be the result of this answer. Yeah, I naught मिल गया. You can calculate this thing. I know that in case of an inductor, current lags the voltage by 90. Current lags the voltage by how many degree? 90 degree. Now they are asking what is the instantaneous voltage when the current is peak value. Peak value matlab current is maximum. So can I say at current becoming maximum, voltage will become minimum? Because they are lagging and leading by 90. Na? So if current over here is maximum, voltage over here will be minimum and the minimum value will become equal to 0. I'll explain this.
because the equation of I and E, over here in case of inductor, current lags by 90 with voltage. Okay. So if the equation of voltage is E is E naught sine omega t, the equation of current will be I naught sine omega t minus pi by 2. अगर ये मैक्सिमम है तो ये कितना होगा, मिनिमम होगा, and vice versa it will happen. If this current is maximum, they are telling you in the question, this has to be minimum value of EMF across the inductor will become equal to what, sir? 0. It's a good question. Fine. Next question, question number 40 of your digest. An AC circuit consists of an inductor of inductance 2 Henry. So L is given as 2 Henry. If the current is replaced by a sine wave of amplitude, when the peak value of the current is given as 0.25 amperes. The frequency is given as 60 hertz. Calculate the potential difference across the inductor, EL. Can I say EL abhi kiya tha is I into XL? What is EL? EL is VL only, same. I is I naught, that is 0.25 into XL. XL ko likh sakte hai beta 2 pi FL. So EL is going to become 0.25 into 2 pi FL. 2 pi F is given as 60 into L is given as 2. So this 2 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, into 2 is 4 into 60 pi. It's 4 and 4 cancel. So EL is going to become 60 pi volts. This is the result of this answer. Okay, so same formula, EL is I into XL. Video. Question number 50. A capacitor of capacitance 2 microfarad. So C is given as 2 microfarad. E is given as 250 sine 100 pi t. So if you compare this with the equation, E is E naught sine omega t. Write an equation for instantaneous current and give the reading of AC ammeter. Always remember, ammeter reads which value? Ammeter reads RMS value. Okay. So is there? सबसे पहले RMS value. So what is E naught given in the question as 250 volt? Omega is given as how much? 100 pi. C is 2 microfarad. अच्छा, सबसे पहले we know that E naught is I naught into opposition. Opposition over here is XC. जैसे XL था वैसे यहाँ पे XC है. So E naught will become I naught into XC. XC is 1/2 pi FC, which could also be written as 2 pi F, can also be written as omega C. So 2 pi F is omega, na? So I naught is given in the question दिया है क्या? I naught. अच्छा, I naught तो ढूंढने का है, तो E naught कितना है? 250 है. I naught into 1/omega C. Omega is 100 pi into capacitance का value is 2 micro, that is 10⁻⁻⁶. Can you multiply this? Will become I naught will become 250 into 100 into 2 into pi into 10⁻⁻⁶. ये I naught मिला एम्पियर में. रहने दो ऐसे ही. They are asking you ammeter reading. Ammeter reading always reads RMS value. तो यहाँ पर I naught नहीं मांगता है. You need IRMS. What is IRMS का formula? I naught by √2. Can I divide by √2? So this whole number which is there 250 into कितना है? 100 into 2 into pi into 10⁻⁻⁶ divide by √2. So √2s are 2. Now you can multiply. This will become 25 into √2 into pi. So 25 √2 pi. 0 कितने हो गए? 1 2 3. 3 और 10⁻⁶ is -3 ampere. Can I say it is 25 pi √2 milliampere?
Got it? Yes or no? This was IRMS. अच्छा, और क्या चाहिए आपको? Instantaneous value of the current मांगता है. We know in case of capacitor, who leads and who lags? Current leads. Voltage by how many degree? 90 डिग्री. मालूम है ना? तो अगर वोल्टेज का इक्वेशन हमको मालूम है, यही सेम इक्वेशन है. इसमें अगर फेज डिफरेंस का 90 डिग्री लीड कर देंगे तो करंट का इक्वेशन मिल जाएगा. मतलब द सेम इक्वेशन I will become I naught. What is I naught? I naught मालूम है आपको? ये है. So I will become I naught sin omega t plus pi by 2 because the current is leading. Current is leading. अच्छा, what is I naught? ये I naught है. देखो ये कितना हो जाएगा? 250 into 5. ये हो जाएगा 5 pi, नहीं 50 pi. ये I naught है ना, 50 pi √2 मिली एम्पियर साइन ओमेगा टी. ओमेगा कितना है? 100 pi t plus pi by 2. This is I का इक्वेशन. I is I naught sin omega t plus pi by 2. This is the instantaneous value of the current which is there, and we know that the current will lead by 90 degree in case of capacitor. So in case of inductor, current was lagging. In case of capacitor, current is leading. Basic sums are there. Basic sum. Achha, in case of resistor, current and voltage both are in the same phase. देखो, अगर resistor होगा तो क्या होगा? Current and voltage both are in the same phase. और इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ER is I into R. अगर इंडक्टर होगा तो इधर का अपोजिशन होगा XL which is 2 pi FL. We know यहाँ पे current lags the voltage by 90. And इधर फॉर्मूला क्या लगेगा? EL is I into XL. वैसे कैपेसिटर होगा तो यहाँ पे कौन सा अपोजिशन आएगा? XC which is 1/2 pi FC. यहाँ पे करंट विल लीड द वोल्टेज बाय 90. एंड इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? E is I into XC. बोलो सही है क्या? यही सब तो कर रहे हैं हम लोग. एंड दिस वी हैड टॉट यू. Deep Shah, have I not taught this thing? Yes, sir. It's been taught. It is being taught in the recorded also, and we had done the revision also that day. बराबर है? 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जब भी रिवीजन हुआ था. लीशा, were you there in the lecture? Yes, sir. तो ये चीज पढ़ाई गई है. जो लोग नए बैठे हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा. हुजैफा, Yeah, sir. do you know this thing? Yeah, sir. Perfect. ठीक है. Now we come to question number 52. So similar type of questions are there again and again, and most of it is end का तो सब कुछ cancel हो चुका है. So we'll finish off today the whole portion. मतलब यही जो कुछ गिने चुने questions है. Next week से we can plan out the revision sessions. Okay. I am going to meet you all tomorrow. Tomorrow you all are coming at what time? 11:30. 11:30 you all are coming, na? So 11:30 to 12:30 is the exam, and then 12:30 to 2 I think lecture is there. बराबर है? Oscillations का आपका. So I will try to come by 1:30 so that we can have a meeting, and then we can plan out the sessions of offline. बराबर है ना? Clear है? ठीक है. So what lectures will be there and everything that we'll see. पहले ये हम लोग खत्म कर लेते हैं. चलो जल्दी करो. Everyone needs to be present tomorrow. Otherwise then we have to call you with the parents then. अच्छा ये देखो ध्यान दो. Question number 52. A 100 microfarad capacitor. So C कितना है? 100 microfarad is charged to a 50 volt supply. तो ERMS कितना है? 50 volt supply. Then the source voltage is removed and the capacitor is connected to an inductor. So in the second case, what is connected, beta? Capacitor is connected to an inductor of inductive reactance 10 ohms. Oh, sorry. As a result of which 5 ampere current flows through the inductor. What is the value of inductance? अच्छा इधर सबसे पहले मेरी बात सुन लो.
The source voltage is removed and the capacitor is connected across an inductor of inductive reactance 10 ampere. तो केस 1 में कौन है सर? सिर्फ एक कैपेसिटर है और ये सोर्स वोल्टेज है. कितना वोल्टेज है? 50 वोल्ट और ये 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर. ये पहला केस है. दिस इज केस 1, इनिशियल केस. केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में ये कैपेसिटर के साथ में एक इंडक्टर भी लगा रहा है. एन इंडक्टर का रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल का वैल्यू इज 10 ohms. एज अ रिजल्ट द करंट फ्लोज ऑफ हाउ मच? कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा? बोलो. हेलो. अरे बाबा टेल मी. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर. बराबर क्या? Our source voltage is removed and the inductor of reactance as a result of 5 ampere current is flowing. Calculate the value of inductance. Okay. अच्छा मेरी बात सुन लो सब लोग इधर. एक्चुअली कॉन्सेप्ट वीडियो में इसमें रॉन्ग दिया है, इसमें टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया. सेकंड केस में क्या हो रहा था? सेकंड केस में सोर्स वोल्टेज को हमने निकाल दिया. नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड थ्रू एन इंडक्टर एंड जो करंट पास हो रहा है यहां से दैट इज 5 एम्पीयर. एंड एक्सएल का वैल्यू कितना दिया है? 10 ohms. करेक्ट है क्या? ये दिया. सोर्स वोल्टेज को निकाल ही दिया सेकंड केस. अच्छा आप लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है क्या? हेलो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? हाफ CV स्क्वायर. सुना है क्या? अरे भाई ये जब जाएगा ना अंदर, इसके अंदर जब जाएगा तो कितना एनर्जी स्टोर होगा इसमें कैपेसिटर में? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा? कितना होगा? हाफ CV स्क्वायर. आर यू देयर विद मी? अरे बाबा हेलो. ये पता है क्या? दीपशा डू यू नो दिस थिंग? जब एक बैटरी लगाते हैं ना हम लोग, जब एक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम लोग एक बैटरी लगाते हैं ऐसे 50 वोल्ट की, तो कितना एनर्जी स्टोर होता है अंदर? हाफ CV स्क्वायर. तो कैन आई से इन द इनिशियल केस द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वाज हाफ CV स्क्वायर. बराबर क्या? तो कैन आई से सेकंड केस में इसके पास कितनी एनर्जी भरी हुई है? हाफ CV स्क्वायर भरी हुई है. अभी इसको इंडक्टर के अक्रॉस लगा दिया तो कैन आई से कैपेसिटर विल डिस्चार्ज इट्स एनर्जी एंड गिव इट टू द इंडक्टर. And what is the energy through the inductor? Half Li square, half Li square, half Li square. पता है क्या? So can I say in the second case, the energy through capacitor is converted to energy in inductor. बोलो, because law of conservation of energy है ना बाबा. Hello. Can I say half CV square is equal to half Li square? Hello. Yes or no? अच्छा can I say half and half will cancel? C का वैल्यू कितना है? 100 माइक्रो. V का वैल्यू कितना? 50 स्क्वायर. L मालूम नहीं है. I स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर. 5 एम्पियर है ना. अरे यस और नो मैन, कम ऑन मैन. कितना होता है ये? 100 into 10 raised to minus 6 into 2500 divided by 25. 100 10:4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 raised to minus 2 हेनरी. Are you there with me? मतलब ये एक्सेल का कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही टाइम पास करने के लिए दिया. बराबर है क्या? ये कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी डाइजेस्ट में कुछ अलग मेथड से सॉल्व किया, आप यही मेथड से सॉल्व करेंगे जो मैं दे रहा हूं. एनर्जी थ्रू कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एनर्जी थ्रू inductor. So energy through the capacitor was half CV square and energy through the inductor is half Li square. Half CV square is half Li square. Half CV square is half Li square. Half CV square is half Li square. Remember this thing, huh? Half CV square is half Li square. $53.
A 15 microfarad capacitor. So capacitor का value is given as 15 microfarad is connected to a RMS value of 220 volt. And कितना supply 15 hertz 50 hertz का supply है. मतलब यहाँ पर एक capacitor है. It is connected to an AC source of this E. Find the capacitive reactance. Capacitive reactance मतलब क्या ढूंढने का है? XC. And RMS value of the current. पहले हम लोग इतना solve कर लेते हैं, ठीक है? So part 1 solve कर लेते हैं. क्या फाइंड करने का? XC. XC का फॉर्मूला क्या है? 1/2 pi FC. Do you agree with me? So 1/2 pi F कितना है? 50 है. C का वैल्यू 15 माइक्रोफैरड है -6. So this could also be written as XC will become, देखो ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके 6 बन जाएगा और ये 250 सा होता है 100 pi 15 बराबर, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 4 बन गया, तो ये बन गया 10,000 डिवाइडेड बाय 15 पाई. बोलो ओम्स में. ये तो मिल गया. बाकी कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो. दिस इज ओके. नेक्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड द RMS current. RMS current, IRMS. You know, ERMS is IRMS and opposition over here is XC. बोलो. अरे भाई अगर ये नॉट लिखूंगा ना तो ये नॉट होगा, पीक होगा तो ये पीक होगा, ये RMS होगा तो ये RMS होगा ना. पीछे तो हमने पीक वैल्यू के साथ किया था ना, अभी RMS के साथ करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर RMS तो यहाँ पर RMS, यहाँ पर पीक तो यहाँ पर पीक. बोलो करेक्ट है. दैट इज ऑल ओके. यहाँ पे RMS है. ERMS is given as 220. IRMS I don't know. XC I know is 10,000. That is 10⁻4/50 pi. So IRMS कितना हो गया? 220 into 15 pi into 10⁻⁻4 ampere. Thus you can calculate and get the result of this answer. Hello. ये XC मिल गया आपको. ये IRMS मिल गया. This is part 1 of your circuit. Correct. Now they are telling you the frequency is doubled. Frequency is what, sir? Doubled. What will happen to the capacitive reactance? अच्छा, capacitive reactance और frequency का क्या relation है दीपशा? XC और F का क्या relation है? Inverse. तो part 2 में अगर हम लोग frequency को double कर देते हैं तो XC के साथ क्या होता है? आधा हो जाएगा ना. अरे man, tell me, hello. So XC dash will become XC/2. What is XC? 10,000 by 15 pi by 2. बोलो ये सही है क्या? हेलो. अरे यार बोलो ना. And what will happen to the current? Can anyone tell me what will happen to the current? ये current के साथ क्या होगा? अरे come on यार, answer this much man. What will happen to this current? देखो ना, करंट का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला देखो. क्या इसे IRMS का फॉर्मूला क्या है? ERMS by XC बराबर क्या? क्या इसे XC is becoming half. XC is becoming half. So current will be double. So can I say in part 2 IRMS dash in the second case will become equal to double of this value? बोलो. Yes or no? What is the main concept that XC is inverse to F? XC is inverse to F. XC is inverse to F. Now we'll come to the next part of the sums. अच्छा, आपको पता है कि अगर हम लोग तीनों को साथ में कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं. 61. Now this is RLC circuit together. हमने L अलग, C अलग और R अलग पढ़ लिया ना. अभी सब सम्स किया ना, दिख रहा है आपको? सबको समझ में आ रहा है? XC, XL and R अलग अलग था. करंट लीड, करंट लैग, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज. अभी तीनों को साथ में लगाया एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो. ईशा, तीनों को साथ में कनेक्ट करते हैं तो अपोजिशन का नाम क्या रहता है? Z, इंपेडेंस. हैव वी डन दिस थिंग? सो हम पढ़ के हैव वी, ये तो आप तो थे ही नहीं लास्ट टाइम. हैव वी डन दिस इन द वीडियो? Yes, sir. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? An LCR circuit is connected together. मतलब this is L, this is C and this is R together. L का value is 100 millihenry
capacitor is given as 25 microfarad and R is given as 15 ohms, is connected in series with a circuit of EMF कितना है, ये RMS कितना है, जब कुछ नहीं दिया तो RMS वैल्यू रहता है, ये RMS वैल्यू है, दिस इज बाय डिफॉल्ट RMS वैल्यू, एंड फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 50 हर्ट्ज. कैलकुलेट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट Z, current at resonance and resonant frequency. Now listen to me, pay attention. तीनों बहुत important question. This is a very typical type question of your boards. सबसे पहले Z निकालना है. Z का फॉर्मूला क्या है? If you remember, इधर का अपोजिशन होता है XL. XL का फॉर्मूला रहेगा 2πfl. इधर का अपोजिशन रहेगा XC, which is 1/2πfc. इधर का अपोजिशन R ही है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग XL फाइंड करेंगे. बेटा XL का फॉर्मूला क्या है? 2πfl. F कितना है 50 है, L कितना है 100 मिली है, 100 into मिली. आर यू देयर विद मी? मैं इधर ही कैलकुलेट कर देता हूँ साइड में, चलेगा क्या? 250 is 100 into 100 is 10⁴ into -3. कितना होता है ये? 100 पाई L. कितना हो गया ये? 100 into 100 10⁴ पाई into 10⁻⁻3. तो कितना होता है? What is pi का वैल्यू? 3.14. तो ये हो जाएगा 31.4. Are you there with me? हेलो. अच्छा, वैसे ही XC कितना हो गया? 1/2πf कितना है? 50 है, into C is given as 25 micro is -6. I'm calculating it here only. देखो ये कितना हो जाता है? 52 सा 100 होता है, 100 into 10⁻⁻6 होगा, -4 ऊपर जाके 10⁴ हो गया अपॉन 25 पाई, and 25 if I see 10000 25 4 is 100 00 will become 400 by 3.14. Are you there with me? ohms में आएगा. करेक्ट है क्या? हेलो, अरे मैन, टेल मी yes or no. क्लियर? अच्छा, यहां पर आपको क्या पूछा है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है. अभी तो मैंने XL निकाल दिया, XC निकाल दिया. अच्छा, इसका आंसर भी कितना आएगा मालूम है? ओके, तो भी आएगा 400 by 3.143. okay, fine, whatever answer comes. Now they are asking you at resonance, you know, at resonance what happens? XL becomes equal to XC. पढ़ा है क्या? XL becomes equal to XC. देखो एक काम करो, हम लोग रेजोनेंस कंडीशन की बात कर लेते हैं पहले. Forget about this question, we'll come to resonance condition. We know that this is LCR circuit and this is E is E0 sin omega t. बराबर क्या? Opposition over here is XL, which is 2πfl, XC, which is 1/2πfc, and this is R. यहाँ पर current lags the voltage by 90, यहाँ पर current leads the voltage by 90, यानी यहाँ पे current and voltage both are in the same phase. ये सबको मालूम है. ये तीनों के opposition का value कितना रहेगा? Z, which is under root of R square plus XL minus XC the whole square. बराबर क्या? And ERMS का फॉर्मूला क्या रहेगा? IRMS into the total opposition. What is the total opposition बच्चा? Z. बराबर क्या? ये दोनों फॉर्मूला इधर लगने वाले हैं. This is general condition जब तीनों को कनेक्ट करेगा. पर हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस की. रेजोनेंस पे क्या होता है? रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है वेयर XL का अपोजिशन एंड XC का अपोजिशन सेम हो जाएगा. अच्छा, अगर XL XC सेम हो गया तो Z का इक्वेशन देखो जरा. Z किसके बराबर हो जाएगा? अरे बेटा, अगर XL XC सेम हो गया तो ये उड़ जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना. तो ऑलरेडी Z इक्वल टू, अरे टेल मी मैन, R नो. मतलब इसके अपोजिशन ने इसके अपोजिशन को मार दिया, XL के अपोजिशन ने XC के अपोजिशन को मार दिया, तो सर्किट में बचा कौन? R ही बचा. So already the E का वैल्यू रिटन नाउ एज ERMS को लिख सकते हैं IRMS into Z, बट Z तो बचा ही नहीं है. कौन बचा है Z की जगह पे? R बचा है. बोलो
कैन आई से अपोजिशन के 3 टुकड़े हैं, 1 2, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज रिएक्टेंस। बट रेजोनेंस में क्या हुआ, रिएक्टेंस 0 हो गया, तो कैन आई से इंपेडेंस जो था सर्किट का वो कितना हो गया, आर हो गया सिर्फ। कैन आई से अपोजिशन बिकम्स मिनिमम। अरे आर और एक्सएल प्लस एक्सी के 2 टुकड़े हैं ना, उसमें से एक टुकड़े ने झगड़ा करके मार दिया अपने आप को, बराबर है क्या? तो आर का अपोजिशन बना, कैन आई से अपोजिशन इज बिकमिंग मिनिमम, सो करंट ओवर हियर will become what, sir? Maximum, because it is opposition to who? Opposition to the flow of current. So can I say at resonance frequency current is becoming maximum? This is maximum current at resonance frequency, and ये resonance frequency का formula रहेगा 1/2 pi root LC। कहां से आया सर? You know XL is equal to XC। XL का फॉर्मूला क्या है? 2 pi FL। XC का फॉर्मूला क्या है? 1/2 pi FC। F को एक जगह पे लो और ये आंसर आ जाएगा, यस और नो? ये रेजोनेंस कंडीशन है जिसके बारे में आप लोग को बहुत ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन में, बराबर है क्या? क्लियर है? ये जनरल कंडीशन है जहां पर रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है, दिस इज जनरल कंडीशन जहां पर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगेगा। बट अगर आपको रेजोनेंस की कंडीशन की बात करेगा तो ही विल टॉक अबाउट दिस थिंग, बराबर है क्या? अब मैं फिर से जा रहा हूँ वो सम की तरफ, हम लोग फिर से वही सम करते हैं। आई विल रब दिस होल थिंग, यू ऑल टेल मी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, if they are asking you at impedance at resonance, अभी मैंने सिखाया लीशा लोधा, what is the impedance at resonance? At resonance what becomes equal to what बेटा? Z is equal to R. नहीं, XL becomes equal to XC, so Z becomes equal to what sir? R। so R का वैल्यू कितना है? 15 ओम। समझ में आ गया क्या? अरे भाई बोलो, तो इम्पिडेंस मिल गया मेरे को, यस और नो? अच्छा दीक्षा, करंट एट रेजोनेंस, व्हाट इज द फार्मूला फॉर करंट एट रेजोनेंस? IRMS वाज ERMS by R। बाय Z नहीं था, बाय R था, बहुत अच्छे। ERMS कितना दिया क्वेश्चन में? 120 दिया है क्या? R कितना है? 15 है। कैन यू कैलकुलेट, यस और नो? अरे भाई बोलो यार, खाली न्यूमेरिकल भी करेंगे तो चैप्टर आ जाएगा, यस और नो? खाली एक बार फटाफट वीडियो देखो 2x पे रख के, 2 वीडियोस है, 2-3 वीडियोस है, उसको देखो, न्यूमेरिकल्स कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा तीसरा वाला क्या पूछ रहा है पढ़ के? तीसरा वाला क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है? So 1/2 pi root LC। 1/2 पाई रूट L। L कितना है क्वेश्चन में? 100 मिली, मिली मतलब -3, और C का वैल्यू कितना है? 25 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6। बोलो क्या ये कितना होता है? 1/2 पाई। इधर देखो सब लोग, -3 -6 कितना होता है? -9, -9 और 2 होता है 7, so 25 into 10⁻7, can I write this as 250 into 10⁻6? बराबर क्या? तो उसको लिख सकते हैं 1/2 पाई रूट ऑफ 250, 10⁻6 को रूट के बाहर निकाला तो 10⁻3 हो गया, ऊपर जाके हो गया 10⁻3। बोलो अरे मैन टेल मी यस और नो? नहीं ये -6, सॉरी ये -6, -6 -9 और 2, हाँ तो ये -6 है, -6 ऊपर जाके -3 हुआ, -3 का +3 हो गया, सही है क्या? हेलो? अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? 1000/2 पाई इंटू रूट ऑफ 250। 250 के करीब कौन सा आता है? 250 के करीब कौन सा रूट है? कैन आई राइट दिस एज 15 और 16 के बीच में? 16 कितना होता है? अरे 16 का रूट के स्क्वायर कितना होता है? 256 and 225। हाँ तो कैन आई से दिस इज 256 के करीब ना, कैन आई राइट दिस एज 15.9 अप्रोक्सीमेटली? बोलो अरे 16 से थोड़ा ही तो कम है, अब ये निकाल दो, ये कितना हो गया? 500, तो 500 into 3.14 into 15.9, you can do this by also, and you will get the result of this answer. I hope you all have understood. This is condition of what sir? कौन सा? रेजोनेंस। सही है क्या? एनी डैम सम ऑफ रेजोनेंस पिकअप करो, एकदम आसान है, क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
62 बस खत्म 62 and then हाँ 82 है 62 and 82 are the same ओके देखते हैं 62 आप लोग होमवर्क कर लेना सेम टाइप का समय कॉइल है कॉइल मतलब इंडक्टर है रेजिस्टर है दिस यू कैन डू circuit 74 is not there 74 is cancelled it is cancelled पावर नहीं है आपको पावर कैंसिल हो चुका है पोर्शन में से हेलो 77 is also not there power cancel हो चुका है okay you can see the whatever deleted portion I've sent you so no issues with that thing 81 is also power associated cancelled यार अच्छा है यार आप लोग को तो कुछ है ही नहीं मतलब खाली बेसिक सम्स है बराबर है क्या 82 भी कैंसल्ड है बिकॉज ये पावर की कंडीशन में आ रहा है बट ये सब है ना हम लोग कर लेते हैं आधा सम करते हैं ताकि आपको आइडिया आएगा ठीक है लास्ट दो सम है क्लियर है ना बेटा आधा सम करते हैं पावर वाले निकाल देंगे ना हम लोग पावर फैक्टर और ये चीज निकाल देंगे ये दो तो कर सकते हैं ना हम लोग अरे सोहम फटके बोलो यार Yes. Where is Siddhant Raj Purvait? Whose friend is that? Krish Lodha, are you there? Yes, sir. Where is your friend? So I don't. know. ध्यान दो उधर. Okay. A sinusoidal voltage of peak value मतलब E naught दिया है. कितना दिया है? 283 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी कितना है उसका? 50 हर्ट्ज. LCR सर्किट R कितना है? 3 ohms है. L कितना है? 25.48 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस दिया सब अजीब वैल्यूज दिया दिख रहा है आपको 796 माइक्रोफैराड है मैं को Z फाइंड करना है अच्छा मैं सबसे पहले Z फाइंड करने के लिए Z का फॉर्मूला क्या दीप शाह Under root R square plus XL minus XC the whole square. तो सबसे पहले मुझे XL निकालना पड़ेगा ना व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर XL ईशा लोदा 2 पाई FL हेलो 2 पाई F कितना है 50 है L कितना है 25.48 मिली हेनरी मिली मतलब 10⁻³ बराबर क्या हेलो बोलो यस और नो दिस वैल्यू व्हेन यू कैलकुलेट यू गेट 8 ohms अच्छा दीक्षा XC का वैल्यू बताओ XC का फार्मूला बताओ 1/2 pi FC. माइक्रोफैराड ये भी मिल जाएगा तो ये वैल्यू मैंने ओके कितना है 4 ohms आएगा तो ये 4 ohms मिल गया ये मिल गया अच्छा Z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना Z का वैल्यू कितना रहेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R कितना है 3 स्क्वायर प्लस 8 - 4 द होल स्क्वायर ना XL - XC द होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 3 स्क्वायर तो रिजल्ट कितना आएगा 5 ohms आएगा यस और नो अरे भाई बोलो यस और नो करेक्ट है ना Z मिल गया 5 ohms अच्छा फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट नाउ लिसन टू मी फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं पे अटेंशन टू मी ओके तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टीच यू ऑल फेज डिफरेंस निकालने के लिए प्लीज लिसन टू मी अच्छा आप एक बात बताओ कौन लीड करता है कौन लैग करता है दीक्षा इन केस ऑफ रेजिस्टर Both are in same phase. करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज सही है क्या इन केस ऑफ इंडक्टर करंट Lags the EMF. लैग्स ईएमएफ आगे है ना इसको बोलेंगे EL ये करंट को रेफरेंस बनाया मैंने सही है क्या इस करंट से ये लैग कर रहे लीड कर रहा है कि नहीं ईएमएफ अच्छा इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स कैपेसिटर में करंट लीड्स तो ईएमएफ लैग्स ना कैपेसिटर का बोलो तीनों को साथ में ज्वाइन कर दिया भाई देखो रेजिस्टर में क्या होता है करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है करंट लैग्स ना बेटा हेलो ये EL ऊपर आ गया ना देखो ना ये करंट से एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है करंट लीड करेगा तो करंट इधर बनाया तो EMF इधर बनाना पड़ेगा कि नहीं यस और नो हेलो
अरे यस और नो, हाँ ना बोलो तो आगे बढ़ेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो नेट रिजल्ट इधर बनेगा EL माइनस EC, बिकॉज आई हैव कंसीडर्ड EL इज बिगर देन EC। ऐसे कंसीडर किया मैंने। कैन आई से नेट EMF जो बना वो ये बना। कैन आई से दिस इज मेकिंग सम एंगल फाई, एंड बाय पैरेललोग्राम लॉ रूल कैन आई से E नेट का स्क्वायर विल बिकम ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अच्छा, E नेट स्क्वायर को लिख सकता हूँ ER को लिख सकते हैं IR द होल स्क्वायर, EL को लिख सकते हैं IXL माइनस IXC, ये सब पढ़ा है, द होल स्क्वायर। कैन आई टेक I स्क्वायर कॉमन? E नेट बाय I स्क्वायर, E नेट बाय I नीचे ले लिया, इस चीज को बोलते हैं Z स्क्वायर। इम्पिडेंसेस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। बोलो प्रूव नहीं किया था क्या मैंने? अरे भाई बोलो, ये Z आ हाँ गया ना सर। यहाँ से। अच्छा, कैन यू कैलकुलेट, कैन एनीवन कैलकुलेट व्हाट इज cos phi इन द सर्किट? cos phi क्या रहेगा यार, ये ट्राइंगल में cos phi क्या रहेगा? ER by E net, ER by E net ना, this by this ना। What is ER? I into R. What is E net? I into Z. तो कैन आई से cos phi क्या होता है? R by Z। सही है क्या? अच्छा, वैसे ही tan phi क्या हो जाएगा? EL minus EC by ER, and if I remove the current it will be XL minus XC by R. This was proved, I have done this। पढ़ के किया क्या? क्या रिकॉर्डिंग में किया रहेगा, क्लियर कट किया है। हेलो, याद नहीं है? Deepsha, have I done this again? Division? यस सर। ये अब यहाँ पर आ जाओ फिर से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, मतलब क्या निकालने का है? फाई निकालने का है। व्हाट इज cos फाई का फॉर्मूला? R by Z। व्हाट इज R का वैल्यू? 3 ना। व्हाट इज Z? 5। 3 by 5। अच्छा, 3 4 5 ट्राइंगल मालूम है सबको? So 53 degrees. हाँ, तो कैन यू टेल मी दिस इज 5, दिस विल बी, दिस इज 5 ना। cos 5 इज 3 by 5, कितना डिग्री होता है ये? 53 डिग्री। सबको समझ में आया? बाकी ये दो तो है नहीं पोर्शन में, आपके पोर्शन में से काट दिया है उसको। पावर फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज cos phi, अगर आपको जानना है तो वीडियो में मैंने किया है। पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं? cos phi। तो cos phi कितना होता है? 3 by 5। ये भी मिल ही गया है एक्चुअली। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन, किसी नेक्स्ट क्वेश्चंस आर लेफ्ट और समथिंग? Okay. Calculate the value of capacitor in picofarad which will make 10 microhenry inductance to oscillate with a frequency of 1 megahertz. ये resonance के frequency। What is the formula for resonance frequency? बराबर क्या? Frequency is 1 megahertz। मेगा मतलब क्या? 10⁶। 1/2 pi रूट LC। L कितना है? 101.4 माइक्रोहेनरी। माइक्रो मतलब -6, और C का वैल्यू मालूम नहीं है। क्लियर है क्या? कैन आई स्क्वायर बोथ साइड्स? सही है क्या? तो C क्या हो जाएगा? 1/, ये 4 पाई स्क्वायर इंटू 101.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12, उधर से नीचे आ जाएगा। ये कितना होता है देखो? 12 एंड -6 होता है। 6 ऊपर जाके -6 हो गया। 4 पाई, पाई स्क्वायर हमेशा 10 होता है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 101.4, बराबर क्या? चलो, ये 0 ऊपर गया तो C का वैल्यू कितना आया? 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 404.4
जो भी है 4 4 जा 16 तो 6 तो ये 5 हो जाएगा. क्लियर है क्या? हेलो, this answer will come in farad. This will be the capacitance value. This was based on resonance frequency. Oh, done. Very good. चलो, तो AC circuits is over. My portion is done. Mustafa sir is doing which chapter now? कौन सा chapter चल रहा है उनका? Fluids. Fluids. And last chapter which is being done will be thermodynamics. Thermodynamics आपका हुआ है क्या chemistry में? Yes. Yes, sir. So that is same. Believe me, it is same. You know what is isothermal, isobaric. सब मालूम है ना सबको? Same है, reflection है इधर, same है. Okay. बाकी जो extra था वो सब काट दिया उन लोगों ने. So that also we'll be doing, ऐसा नहीं है कि we will not be doing. So हम फट गए, you all have done thermodynamics. मनोज भंडारकर सर के साथ. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो डन. हाँ तो बाकी सब आई थिंक सो इट इज डन ओनली. सो एक्चुअली आपको पूरा पोर्शन आता है अभी बेसिकली. अभी सेकंड राउंड के लिए हम लोग जा सकते हैं. अभी सेकंड राउंड में मुझे है ना 2 दिन चाहिए आपके. एक दिन तो आपका वेडनेसडे है और एक दिन फ्राइडे है. वेडनेसडे को ताहिर सर इज टेकिंग ना. विच चैप्टर इज गॉट ओवर? विच चैप्टर गॉट ओवर? स्टार्टिंग में एक चैप्टर हुआ है ना शायद आप लोग का. Yes, हेलो, sir. which First chapter chapter is got over? rotational dynamics. Did you all understand? Yes, sir. ये चैप्टर खत्म हो गया. Now tomorrow he will be starting with which chapter? Oscillations. उसी के साथ में फ्राइडे को also I am planning to arrange after maybe this month नहीं next month. अभी अक्टूबर आएगा ना. अभी ये सितंबर छोड़ दो. अक्टूबर में we'll start with Friday also before the test या after the test. बराबर है? तो आप लोग आ रहे हो ना टेस्ट देने के लिए, तो एटलीस्ट एक चैप्टर करके जाएंगे हम लोग. तो आई विल बी टेकिंग समटाइम्स अदर टीचर्स विल बी टेकिंग, तो विल बी टेकिंग द लेक्चर्स. तो यहाँ पर हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गेटिंग इट ना? So we finished oscillation. No, revision. Yeah, so we finished the revision for oscillation. You finished the revision for oscillations? So that day only, there were like 3-4 derivatives. And हाँ, so he'll be doing numericals then. Numericals you all have done? No, na? also, हाँ, so numericals he will be doing. Then Friday को we'll be doing these kind of chapters like atom, molecule. Someday Viraj sir will come. ठीक है ना? So that we'll be taking that lecture. Comfortable है ना? सब लोग आएंगे इसलिए मैं रख रहा हूँ. तो टाइम वेस्ट मत करना प्लीज. वैसे ही हम लोग के पास. Yeah, tell me. so Friday we have vocational lectures. So can you keep it on some other time if it's possible? But test is not comfortable for you all. Friday also. Test also is not comfortable. But Yes, sir. lectures will go on till how much time? No. So KCB Yes. will have a maths practical lecture. Where do you do On it? Friday. Yes, sir. Every Friday you all have a what? Yes, sir. Friday and Monday. Thursday को ठीक है. टेस्ट तो देना पड़ेगा बेटा ये फ्राइडे को, वरना मैं कॉल करूंगा. टेस्ट तो आके देके जाना. ठीक है? ऑनलाइन होता है ना सब प्रैक्टिकल. तो हम फट गए. हाँ Yes, sir. हाँ, तो आप टेस्ट दो और फिर यू कैन लीव. बट टेस्ट देना पड़ेगा. दिस विल प्लान आउट. एक काम करते हैं, दिस विल प्लान आउट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अभी अक्टूबर आएगा ना, उसमें प्लानिंग कर लेते क्या करना है. बट अभी फिलहाल ये सितंबर तक चलने दो जैसे चल रहा है वैसे. ये अक्टूबर में हम लोग थोड़ा प्लान चेंज कर देंगे. ये कंफर्टेबल है ना वेडनेसडे वाला? हेलो, Yeah, sir. एवरीवन विल कम ओवर हियर. सर अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए. Tomorrow there will only be a test, right? No, lecture will be there. Those who are doing, they already it is done only numericals. This is second revision, Baba. Hello.
first revision is done, first lecture is done, so you can revise. Those who cannot come, they have to cover up. Clear है? आप लोग वेडनेसडे को कवर कर लेना फिर उसको सर को पूछ के. सेम न्यूमेरिकल्स विल बी डन व्हाट आई हैव डन इनिशियली, पर आपको लेक्चर तो बैठना पड़ेगा. लेक्चर विल नॉट बी कैंसिल. ये हम लोग अरेंज कर देंगे फ्राइडे का. अभी फिलहाल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. कल टेस्ट है, लेक्चर भी रहेगा. चलो ओके. एंड देन नेक्स्ट मंथ से हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे, क्या करना है जैसे देख लेंगे. सो चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय. Thank you. Thank you, sir.